Audio Jungle. अब तक आपने सीख लिया क्यों क्रिप्टो को छोड़ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। You've learned अगर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए एज अ बिगिनर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंडिंग क्यों करना चाहिए। We've learned why ETFs or indexes are a better option for beginners. Also discussed a high capital ETF. Suitable broker कैसे सिलेक्ट करना है और अकाउंट ओपन करने के लिए क्या-क्या रिक्वायर्ड है। इन्फ्लेशन का सामना करना है या 25 दिन में पैसे डबल करने हैं। जानना चाहते हो राज तो लेना शुरू हो जाओ स्टॉक मार्केट की मालूमात and get investing as soon as possible. So investing in the stock market is a good way to make money and generate passive income. But it can be a difficult process for beginners or those who are not familiar with the stock market. There are many different ways to invest in the stock market. The easiest is through an online broker. There is Kite, Upstocks, etc. These brokers let you buy and sell the stock or index you wish to buy and charge a fee for it. So buying and selling stocks is just like buying and selling real estate. You contact an agent, he fixes his commission and gets you the best price. The same exact cycle is happening in the stock market, except this is all happening within seconds. I've prepared a list. Sabse pehle, let's have a look at it. Then we will individually dive into the topics, understand them, and put your knowledge to the test. Select broker. वैसे तो कुछ ब्रोकर्स अंडर 18 को भी डीमैट अकाउंट दे देते हैं, पर इंडिया में डीमैट अकाउंट लेने के लिए आपको 18 होना चाहिए एटलीस्ट, या फिर अपने गार्डियंस और पेरेंट्स के नाम से अकाउंट बनवाकर 18 होने के बाद ट्रांसफर करा लें, whichever suits you. Make your own portfolio. अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी समझो, हाई यील्डिंग स्टॉक्स पिक करो, ETFs इंडेक्सेस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, etc. And lastly, invest and forget. And years later, walk out rich. So let's get started. देखिए सबसे पहले तो जितनी जानकारी या नॉलेज ले सकते हो ले लो। YouTube पर वीडियोस भरी पड़ी हैं, ई-बुक्स, ब्लॉग्स, etc. Learn from others' mistakes before you do your own. उसके लिए हमारा चैनल भी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। उसके अलावा you have to get your documents ready. कौन से डॉक्यूमेंट्स? पैन कार्ड होना चाहिए। बगैर पैन कार्ड के डीमैट या डीमेटीरियलाइजेशन अकाउंट जिसमें बॉट स्टॉक्स, इंडेक्सेस, बॉन्ड्स वगैरह होल्ड किए जाते हैं, just like your bank account. नहीं बनता। पैन कार्ड से सारी टैक्सेशंस, GST etc. की जाएंगी on every buying and selling you perform. अब आती है हमारी ब्रोकरेज की। Zerodha is one of the oldest, hence most trustable when it comes to brokerage. Charges around 300 rupees account opening. Fees vary if you want to trade commodities like gold, silver, as well as 200 rupees in the form of annual maintenance. Grow, on the other hand, was launched in 2010 and is famous for offering zero charges for account opening and maintenance. Other names include Upstocks or Angel Brokerage. कौन सा broker select करना है? That depends on your case. Forex, commodities जैसे ज्यादा options चाहिए? Amateur trader हो? Then Zerodha is the right choice. Beginner हो? Looking to put your learnings into a trade? Go for Grow. छोटी मोटी ट्रेड्स करें। मार्केट शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट कब और क्यों करें क्या पता। So go for Grow. डिटेल्ड एनालिसिस किसी और टाइम, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ऊपर से समझ लो। Now there are a variety of options you get once you open up your brokerage account. You can trade in equity, commodities, futures and options. मोटे अल्फाजों में बताऊं तो एज अ बिगिनर आपका काम सिर्फ इक्विटी से। नाउ इक्विटी में भी बहुत से तरीके हैं, लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग etc. But as a beginner, long-term investing is what we'll discuss, since that's where the real fun and profiting is. Day trading वगैरह बहुत रिस्की है and hardly अच्छे रिटर्न्स देते हैं। कमोडिटीज, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, ये सब एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी तक सिर्फ सिंपल स्टॉक्स, ETFs, इंडेक्स को समझ लेते हैं। Now since you're just getting started and have very limited knowledge, don't try to dive deep. Take my suggestion and buy ETFs or indexes. क्यों? Now you may ask, Sir, इंडेक्स के बारे में तो पता है, अब ये ETFs क्या है? तो listen, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस फर्क इतना है इंडेक्स आप म्यूचुअल फंड से बाय करोगे, उसके लिए जीरोधा की कॉइन ऐप इस्तेमाल होगी, और ETFs आप डायरेक्टली ब्रोकर्स के थ्रू बाय एंड सेल करते हैं फ्रॉम द एक्सचेंज। इंडेक्सेस म्यूचुअल फंड्स क्रिएट करते हैं, जबकि ETFs आर इशूड बाय द स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ। कमोडिटीज के ETFs होते हैं, बॉन्ड्स के ETFs होते हैं, फॉरेक्स के ETFs होते हैं। Investing in ETFs are like investing with the gear on. Profit ratio is almost the same.
मुनाफा थोड़ा सा कम होता है ETFs में, बट लाइक आई सेड, अगर नॉर्मल बॉन्ड 10% लॉस में जाता है तो ETFs शायद 6% पे जाकर रुक जाए। The point is to buy ETFs. सेफ ऑप्शन है, सिमिलर यील्ड भी देता है, लॉन्ग टर्म लॉस होने के 0 चांसेस, बेस्ट स्टॉक से बना हुआ। और क्या चाहिए? अब कौन से ETFs में इन्वेस्ट करना चाहिए? You might be asking, सर आपने ये तो क्लियर कर दिया ETFs क्या होते हैं और किसके लिए, जरा ये भी क्लियर कर दे अच्छा ETF कैसे पिक करें। डोंट यू वरी, बिकॉज़ मेरे पास आपके हर मसले का सोल्यूशन है। ETFs चूज करते वक्त आपने बस खुद से 4 सवाल पूछने। मार्केट कैप, don't let the profitability of an ETF fool you. Have a look at the market of the ETF and the index, currency or stock it follows as well. ETF का सिर्फ एक मसला है, इसकी liquidity थोड़ी कम होती है, which makes it hard to exit, or you'll have to sell at a discounted price and cut down your profits. Expense ratio. देखिए, our prime objective is to make maximum money without taking high risks. अब क्या फायदा इन्वेस्ट करने का जब गिने चुने 15-20% प्रॉफिट में से 1.5% मैनेजमेंट फीस एटसेट्रा में चले जाए। Look up on Google to know the ratio of the desired ETF. Don't forget to check upon the index, a commodity your ETF is following. ETF is like a trailer behind a van used for camping. The point is the level of comfort you get depends on how the van is driving. ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी वैन कंट्रोल लूज कर दे और क्रैश हो जाए। आपको लगता है पीछे लगा हुआ ट्रेलर सही सलामत वैसा का वैसा रहेगा। Nippon India ETF Nifty Bees is probably the oldest ETF in the Indian market and a perfect example. Market cap nearly 60 crore, expense ratio 1% and annual growth of nearly 15%. DSP Nifty 50 ETF is also an ideal example. Market cap 50 crore and expense ratio 0.29%. Now this was the simplest, easiest and most effective way to invest in top stocks without having to monitor them individually. But on the other hand, अगर थोड़ी basic knowledge stock picking में रखते हो, only then go for individual stocks. Otherwise, आप अपने पैसे पानी की तरह बहाने वाले हो। कम पैसे इन्वेस्ट करो, see how it is to play with fire, see how the market fluctuates on a daily basis. Individual stocks में इन्वेस्ट करना is like a roller coaster. वो क्यों? Blue chip stocks like Reliance, Tata would fluctuate 2 to 4% on a daily basis during its trading hours. Let's say about 3 out of 5 days, stock closes at a profit. किसी दिन 3% प्रॉफिट पर क्लोज हुआ तो किसी दिन 4% लॉस। एवरेज वीकली डिफरेंस लगा लें तो स्टॉक ऑफ अ वेल परफॉर्मिंग कंपनी वुड डेफिनेटली रिटर्न 0.4, 0.3, 0.7 और इवन 2 to 3% per week। इसमें लॉस में जाने वाले दिन भी मैंने इंक्लूड किए हैं। So like I said, individual stocks are like a roller coaster. अगर राइड करना जानते हो तो let's say 0.7% profits per week के हिसाब से in a year 36% का profit देगा। है ना amazing figures? Want to know how to pick the correct stocks? Comment down so I can see how many of you are looking forward to this ride. If the individual stocks are like a Ferrari, fun, quick, but more likely to get into a crash, unlike index funds, which represent an average family car, fit for all your needs, easy to maintain and keep, no need to do regular checkups. Both of these have their own perks and downsides. We'll get into what to pick and when to pick in another video. But for now, let's stick to ETFs and index. Acha, वैसे you might ask, why stocks? Why not crypto or real estate? I already knew your concerns. So I did a quick analysis of these three so you could understand the risks and returns associated with each of them. Have a look at this. Answer me first. What do we look into before we decide to lend our money to someone? We first consider the fact whether the person asking can be trusted to hand the money back when you need it. That's the exact problem with different trending cryptocurrencies. They do give incredible returns, but don't let it fool you with their volatility. You might be flying high, but one bad news and you might get to taste the dirt as well. We've seen how Bitcoin is getting accepted in one part of the world and rejected or banned in the other. Now going back to the example, what if we get an urgency to get the money back? And that, my friends, is the problem with real estate. You can't sell a property or land in a matter of seconds. Plus, you also don't get as much rewarding returns. Yes, real estate isn't risky. It doesn't require you to know technical factors. But why settle for something average when I'm here to guide your way up? Now, I hope this video turned out to be highly informative and helpful to kickstart your journey in the share market. Ab, it's your turn to do me a favor और इस subscribe button को दबाकर इसका रंग उड़ा दो. Until then, Omega Finance signing out.